Please, let's give a big hand to the sound technicians. ये इतना जल्दी काम होता नहीं. Right? So सारे 12 सुर जो हैं एक साथ हम इनको तीवर रे और कोमल रे. Now what we're going to do is we're going to play them all in sequence. So sa re re ga ga ma ma pa da da re sa sa re re da da pa ma ma ga re sa. अब हम अक्सर इनको इस तरह सुनते नहीं हैं और अगर ये इन सब 12 सुरों को अगर थोड़ी सी तेजी से बजाएंगे बाजे पे now you can see that it becomes this kind of like almost comical query like sound, you know, that you hear in these suspense scenes, you know, right? So what we end up hearing is sometimes what we associate with musical sound is, let's say, if we just played for you just the T-word. So सारे T-word notes एक साथ. Sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma da pa re sa. Now it sounds a little bit more familiar and musical to you, right? When you hear sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa. And what if you heard just the komal surs all together? Sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re. Where did this take you, by the way? When you heard just the komal surs together, didn't it transport you once again? What did you do? Two notes in our system. So, for example, let's take. He was just doing this rag called Bhairav, so I'm now thinking in these notes. It's a mixture of komal and tivar. So we could do sa re sa, right? But we could do sa re sa. इंतजार साहब, ये क्या चीज़ है जो हम इस तरह से सा और रे के बीच में छेड़? ये आप मींड की किस्म कह सकते हैं. सा रे सा. It's a slide. It's a gliding between the notes. So we're using a lot of the in-between frequencies as well. इसको हम कहते हैं मीन. ठीक है? और ये बहुत सारे गानों में आपको सुनाई देता है. यही एक शनाख्त कर देती है फौरन कि ये हमारी मौसीकी है. जैसे स्लाइड. यूं जिंदगी की है और रस के बलवान. See, mean? Hi. I'm not as good as him, so but that's why I'm singing so that you understand the difference between a good vocalist and a mediocre vocalist. That's also very important because ये शनाख्त करना बहुत ज़रूरी हो गया है पाकिस्तान में. अच्छा, then there is खटका. उसके बगैर तो गुजारा नहीं है. खटका, as it sounds, it's a jerk. It's a repeated accent on the same note. खटके की मिसाल दीजिए. आज जाने की जिद ना करो. ठीक है, तो खटके से आप for permutations, which are basically ordering of things, of objects. So of course you can have permutations of the notes as well, and you can possibly think of how many different kinds of scales you can develop, how many different kind of accents. अभी मैंने आपको भोपाली सुनाया, which was sa re ga pa da sa ga pa ga re sa, because I excluded some notes. If I include more notes, उसका रंग बदल जाता है. नी रे गा मा, अब माँ इंक्लूड कर दिया.
धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा. Eman, rag Eman ban gaya. If I change the combination of notes that I'm selecting from these 12, so sa re ga ma pa dha pa da ma pa ga ma re sa. Do you see how different moods have been created, right? And so there's all sorts of possibilities, and our music has studied, it's like one of the most exhaustive studies of melody in the world, because there are at least about 200 rags that have been documented, and there's many more that go undocumented. And कोई एक आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी में 50 राग भी के ऊपर अबूर हो जाए तो उसी को उस्ताद मानेंगे, ठीक है? वैसे तो कहते हैं कि किसी उस्ताद से 4 अच्छे राग सुन लो, बहुत बड़ी बात, ठीक है? तो ये तो हो गया राग्स. लेकिन अब ये जो ऑर्नामेंटेशंस है और गमक जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, gamak is very important to travel. It's almost like mean that's condensed. Mean was sliding between notes. So for example, if I want to say something like, do that, saga re. I didn't say saga re, I said saga re, re ga ma. तो ये सरगम कहने का भी एक अंदाज है. और I could do 3 1 2 sa ga sa re marega pagama. Now what are these permutations that I'm talking about? These help in when you're practicing music. They help in you getting confident with the surs, and so that आपके गले में बहुत सारी ये जो सुरों के अंदाज है वो बैठ जाएं. So for example, sare saga, like 1 2 1 3, and this is using another kind of pattern. सारे सागा रेगा रेमा गापा. अब ये आपको सुनाएंगे, ये वाला पलटा, लेकिन इसको पहले सरगम में सुनाएंगे, फिर आकार में. सारे सागा रेगा रे मा गा पा मा धा मा पा मा धा पा नि गा सा. अब ये जो बाउंसिंग ऑफ नोट्स है इसको कहते हैं हम गमक. एंड गमक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर म्यूज़िक, क्योंकि उसके बगैर बहुत सारी ट्रैवल जो है, जो तेज़ ट्रैवल है, जो इस्तेमाल होती है तान कहने में. तो तान क्या चीज़ है? इट्स मैनी सुर्स दैट यू गोना स्ट्रिंग टुगेदर इन स्पीड, ठीक है? नी रे गा मा धा पा मा गा मा धा नी दा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा. एंड यू सी कि मेरे कहने का भी अंदाज ऐसा था कि वो बाउंस कर रहे थे. आई डिडंट से नी रे गा मा धा पा मा गा मा धा नी दा, नी रे गा मा धा पा मा गा मा धा नी दा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा. सो दैट इज द यूज ऑफ गमक. अभी आकार में अगर कोई तान कहेंगे तो कैसे कहेंगे? And there you have other factors of music. It's not just about making it sound peaceful and serene. Sometimes you want bravado. Sometimes you want other kinds of emotions. So music has, it's an art form. It has to have the whole palette, and that's where the 9 rasas come in. You have Shringar ras, Bhayanak ras, Veer ras, and many others, Shanti ras. So all of these ornaments and all of these methods are so that we can do some of this work. Now look at some more complex patterns. आपको convey करना है. अब वो फैसला कर AI पे छोड़ दें तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मौसीकी का हाल देखते हुए शायद छोड़ ही देना चाहिए AI पे. इंतज़ार साहब, अब ये जो पलटे हैं, आपने बहुत पलटे सीखे, रियाज किया, लेकिन अब हम जब कोई बंदिश पेश करते, बंदिश इज़ अ कॉम्पोजिशन, तो जिसको ख्याल गायकी में बहुत यूज़ होती है तान. सो तान के अंदर ये पलटे किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, थोड़ी सी आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं? और एक बंदिश की शक्ल में अगर आप दे सकते, बहुत अच्छे होते हैं. अब आपको एक पूरी अस्थाई सुननी पड़ेगी.
सारे पहलावे आपको सुनने को मिलेंगे इस इंट्रोडक्शन में। इसको आलाप कहते हैं हमारी दुनिया में। नया करो पार गरीब नवाज, नया करो पार गरीब नवाज, नया करो गरीब Gare